Hello friends, welcome back to my channel, and first of all I would like to thanks all the viewers for your support and your comments. And this video is on IBO 05. हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया इसको अच्छे से बनाने के लिए, बट एनी हाउ आई मैनेज टू पिक अप फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, which can help you in your preparation. And I would again advise you to follow your study materials and books also apart from this questions that I am going to share in this video. And one more request friends, that kindly those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe and also share it to your friends and relatives. So without wasting any time, let's start the video. And the first question is the difference between domestic logistics and international logistics. Actually, IPO 05 is all about, marketing logistics, international marketing logistics. Right. Actually, logistics means movement of goods from one place to another. Right. Okay. So, as the name implies, domestic, international. Right. It is within our country, and international logistics refers to the movement of goods from one country to another. Okay. Let's try to find few important points of distinction. Now, in domestic logistics, direct communication and immediate control can be possible, but in international logistics, it is not possible. Second, the rules and regulations are clearly understood, right, in domestic, and in international, the foreign rules and regulations are to be understood because here two or more countries are involved. Again, in domestic or local language is used, but in international, minimum of two languages are used. And domestic logistics is less risky and it is bit economical, but it is more risky and expensive. Then the mode of transport for domestic logistics is usually rail transport and road transport, whereas here either sea transport or air transport. Okay. Then the last point, the minimum documentation is required in case of domestic logistics, but in case of international, quite a number of rules, regulations, and documents has to be prepared, right? Okay, let's move on to the next question. The problems of shipping industries in India. It's a very important question, and I have just jot down the important points. एंड इसको आपको एक्सप्लेन करना है, राइट. नाउ फर्स्ट, इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो. इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत सारा कार्गो को हैंडल कर सकते हैं. देन देर आर शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स जिसमें कार्गो जाता है, बिग कंटेनर्स. एंड ओवर एजेड वेसल्स, जो शिप्स, जो इंडिया में जो शिप्स हैं, दे आर वेरी ओल्ड, ठीक है, काफ़ी मतलब आउटडेटेड हैं. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. And then they have to face stiff competition from foreign shipping companies. Okay, so that is one of the problem. Then there is too much of congestion at the ports, right? So that leads to delays in imports and exports. Then inadequate infrastructure facilities. There are lot of facilities apart from shipping. ऐसे बहुत सारी facilities जो port में नहीं होती, Indian ports में. So that is one of the problem. Then let's move on to the next question. The strategies to solve the shipping problems in India. ये सारी problems को हम लोग remove कर सकते हैं, and the government is trying its best to remove these shortcomings. Now, what are the strategies? More investment in shipping industries has been made by the government, and it is also encouraging the the private investors to invest. Then developing adequate containers. Okay, more attention is given to this. Then there is an integration of shipping and logistics. ठीक है, shipping and logistics इन दोनों को combine करके गवर्नमेंट काफ़ी steps ले रही है. Then creation of more warehousing facilities. ये बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे warehouses नहीं है ports के पास, तो ये डेवलप कर रही है. Then development of more ports. तो these are few strategies. Then the next question, types of surcharges on freight rates. ठीक है, surcharge, charge, surcharge, taxes,
तो ऐसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में ऐसे कौन कौन से टाइप के सरचार्जेस हैं जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट, बेसिक ओशन रेट्स, ठीक है, ये तो मतलब जो फ्रेट होता है शिप का, दैट। देन फ्यूल सरचार्ज है, रेसिडेंशियल डिलीवरी सरचार्ज, अगर डिलीवरी अगर इंपोर्टर्स को डिलीवरी इफ दे नीड डिलीवरी एट देयर डोर स्टेप, देन देयर इज अगेन फ्यूल सरचार्जेस। देन ओवरसाइज पैकिंग सरचार्ज, अगर कंटेनर्स अगर ओवर पैक हो गए देन अगेन उसके लिए भी चार्जेस देने होते हैं। देन सैटरडे सरचार्जेस, कभी कभी ऐसा होता है कि इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को सैटरडे या संडे को डिलीवरी चाहिए, तो इसके लिए भी एडिशनल चार्जेस पेमेंट करने होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, ठीक है, देखते हैं पहले क्या चीज़ है ये। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ICC, उसी का एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। नाउ ये करता क्या है? इट्स एम इज टू कंट्रोल द क्राइम्स रिलेटेड टू मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉड्स, जो मैरीटाइम फ्रॉड्स हो रहे हैं इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ओके, it looks after the piracy and commercial frauds especially. It protects the crews of ocean going vessels and it publishes a weekly piracy report. हर हफ्ते एक piracy report ये issue करता है, and it has a 24/7 piracy reporting center in Kuala Lumpur, Malaysia, right? And its main divisions, जो इसके again it is divided into different departments. First, काउंटरफिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड फ्रॉड नेट। इसके अंदर से ये फ्रॉड नेट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एंड ये फ्रॉड्स को रोकने का काम करती है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड स्टेट द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू सच फ्रॉड्स, राइट। सो मैरीटाइम फ्रॉड्स, इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस ऑफ obtaining goods or money during maritime trade. And at times many parties are they are joined together in this fraud, such as the shipper, the trader, the banker, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके भी कभी कभी इसके अंदर फॉर्जरी करते हैं। तो एंड बेसिकली फ्रॉड तो होते ही हैं इसके अंदर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में। एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स जिसके लिए ये होते हैं? फर्स्ट, मल्टीपल पार्टीज आर इन्वॉल्व, बहुत सारी पार्टीज अगर इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन में, then there are every chances of making a fraud. Then government are not strict enough, इतना अच्छा विजिलेंस नहीं है, तो easily fraud करके लोग चले जाते हैं. Then overlooking of documents, then timely detection and lack of action, right? So this is one problem, and the process of handling these international disputes and frauds is very very slow and very complex. सो इसका फ़ायदा ये फ्रॉड्स उनको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर। अगर इफ़ यू आर एन एक्सपोर्टर एंड इफ़ यू आर गेटिंग एन ऑर्डर, हाउ विल यू प्रिपेयर योर एक्सपोर्ट्स? सो दीज आर ऑल द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट, you will receive an order, receipt an order, then obtaining the license. If you have, then it's okay, and if you don't have, you have to obtain an export license. Then obtain the letter of credit. इसके बारे में हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं. Actually, LOC is a guarantee given by the importer's bank that if importer will not honor the payment, it will pay on his behalf, right? Then fixing exchange rate, foreign exchange formalities, these have to be completed. Then preparation of the order, जो ऑर्डर है उसका प्रिपरेशन करना या प्रोडक्शन करना। देन फॉर्मेलिटीज़ बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट ये सारी डॉक फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी है, दे आर ऑल डन बाय फॉरवर्डिंग एजेंट्स, राइट। देन बिल ऑफ लेडिंग ये प्रिपेयर करना है। एक्चुअली दिस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द शिप, द कैरियर, कि द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय इट। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक and then realization of export proceeds. So all these are important steps. The next one is charter party clauses.
ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। देखते हैं चार्टर पार्टी क्या होता है। बहुत इजी है। नाउ इट इज़ अ मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ शिप ओनर एंड ए चार्टरर टू हायर अ शिप, यू नो, और पूरी शिप को हायर कर सकता है, और इट कैन ऑल्सो हायर ए पार्ट ऑफ ए शिप फॉर ए स्पेसिफिक वॉइस। ठीक है, जैसे हम लोग पूरी की पूरी एक कोई बस बुक करते हैं या फिर कोई एक बड़ी आई मीन टैक्सी बुक करते हैं, लाइक दैट आप शिप भी बुक कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। ठीक है, एंड व्हाट आर द मेन क्लॉजेस ऑफ इट? इसके मेन क्लॉजेस में फ्रेंड्स, प्लेस, डेट, नेम एंड डोमिसाइल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ये होना चाहिए उसके क्लॉज में। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेसल, कार्गो डिस्क्रिप्शन, क्या कार्गो इसमें जा रहा है। देन लोडिंग प्राइस एंड पोर्ट नेम, कहाँ से निकला है, उसका लोडिंग प्राइस क्या है, फ्रेट कितना पेमेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लोडिंग, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बिल ऑफ लैडिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ऑल दिस आर द important clauses of charter party clause, right? Next, move on to the next question. Okay, what is marketing logistics? State its importance, right? Now marketing logistics is a process of delivering the finished goods to the customers or intermediaries, right? And an efficient logistics system helps to reduce cost and improve customer service. The main aim is to smoothen distribution process. Okay, and the important functions of this marketing logistics are, let's see the important functions. The first one is warehousing. They provide warehouses. They may or may not provide, that's not compulsory. Then they also help in inventory management, what stock the firm should maintain. Then they also provide transportation of goods from local, international, national, whatever it is. Then logistics information management. How to manage the logistics information? क्योंकि लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर के पास में जाए, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन दैट. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स टू कंप्लीट ऑर्डर्स इन टाइम and quickly also. It also provides warehousing facilities. It helps in inventory management. It helps to handle the supply chain. So all these are the benefits of marketing logistics. Okay, next, move on to the next question. Functions of Central Warehousing Corporation, right? CWC. Okay. It is a public sector enterprise engaged in warehousing activities, particularly of food and public distribution item. Okay, and these are located near every railway station or port or even airports for easy transportation and movement of goods. And basically ये गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस हैं, जो आपने देखा भी होगा स्टेशंस के आसपास में ये लोग रहते हैं. एंड द मेन की फंक्शंस ऑफ दिस वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आर to build godowns and warehouses at suitable locations in India to store mainly agricultural products. क्योंकि ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस है और गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो बेसिकली यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स. ठीक है, ओके. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एन एजेंट of the government for the purchase, sale, storage and distribution of essential commodities like rice, wheat, sugar and all that. And it also arranges transportation of the essential commodities. So these were the basic functions. Now next, move on to the next question is the features of commercial shipping. Now first, मेन फीचर्स आर इट डिपेंड्स ऑन द पोर्ट फैसिलिटीज़. ठीक है, एक कमर्शियल शिपिंग की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल ऑन द पोर्ट, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, बिकॉज इंटरनेशनली जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, कमर्शियल शिपिंग विल बी अफेक्टेड अकॉर्डिंगली, एंड इट इज़ रिस्की, एक्सपेंसिव. It depends on the transport modes like road and rail, and it also provides warehousing facilities and also like availability of container facility. Generally जो कार्गो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो कंटेनर्स में जाते हैं.
बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन in development of ports in India, right? Now, ports may be classified into major ports and minor ports. Major ports are generally managed by the central government and minor ports are managed by the state government. And in 1996, India opened doors for private participation or investment in the development of ports in India. And private sectors are invited to investment. The private individuals or firms can invest in port assets, lease equipments, like that. Okay, for that they get a return profit on that, right? The next question is factors to be considered for selecting the mode of inland transport. कोई भी inland transport select करने के पहले what are the factors we should consider? First, cost, कितना freight होगा, what is the charge? Second, speed, then regularity of services, safety, how safe it is, flexibility, and ancillary services, that means after sales services or customer services. तो ये तो बहुत ही ईजी पॉइंट है, हम लोग इसको अपने कॉमन सेंस से भी इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, राइट. ओके, द नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन टू द शिपर्स, राइट. द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कार्गो बाय प्लेसिंग देम इन लार्ज कंटेनर्स इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन, right? And what are the main advantages? They offer flexibility, that means variety of goods can be packed in these containers, and this makes the handling easy, they can be easily handled, and it gives rise to economies of large scale, right? थोड़ा सा cost effective हो जाता है, cheaper हो जाता है. Then it is durable because the container's life is believed to be around 10 to 25 years, and it is safe and secured. The goods are not damaged easily, and it gives rise to standardization. ठीक है, तो ये मेन एडवांटेजेस हैं कंटेनराइजेशन के, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, राइट. ओके, फर्स्ट यू नीड अ डॉक रिसीट, देन वेयरहाउस रिसीट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फ्री ट्रेड डॉक्यूमेंट, कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट, डेस्टिनेशन कंट्रोल स्टेटमेंट. तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपोर्टर before exporting the logistics, right? Okay, now you must define all these points. Let's move on to the next question, and this is liner conference system. Now what is this all about? These are trade agreements between shipping lines which could legally fix prices and coordinate capacity on their respective trade lanes. And the main object is to reduce competition among the members. It allows ship owners to join together and operate on a regular basis, or liner service, which is in other sense. It helps to provide scheduled cargo or passenger service on a particular sea route at a uniform rate. In simple words, लाइनर कॉन्फ्रेंस सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे शिपर्स मिलके एक टाइप का एसोसिएशन बनाते हैं जहाँ पे वो लोग एक फिक्स रूट में ऑपरेट करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने हमारे कंट्री में भी होते हैं, जैसे जो लोकल जो सिटी एरिया में जो बस सर्विसेज, लोकल बस सर्विसेज जो ऑपरेट करती है, दे हैव एन एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशंस, तो उसको फॉलो करती हैं. तो लाइक दैट ये शिपिंग के बारे में है, दैट्स द डिफरेंस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7R ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. इसको हम लोग 7R फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, राइट. नाउ ये इनके एक्चुअली इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के ये मेन प्रिंसिपल्स हैं. दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, राइट प्रोडक्ट. सेकंड, राइट कस्टमर. थर्ड, राइट टाइम. फोर्थ, राइट प्लेस. फिफ्थ, राइट कंडीशन. सिक्स्थ, राइट क्वांटिटी. एंड सेवेंथ, राइट कॉस्ट. ठीक है, इनको डिफाइन करना है, राइट. तो ये 7R ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. एंड the next question is the difference between bill of lading and charter party. Okay, now bill of lading is a document acknowledging the receipt of goods on board or by the carrier ship, and charter party, it is a hiring of the entire or part of a ship for a particular voyage. It is transferable, it is not transferable. Loans can be raised on bills of lading, but here loans cannot be raised.
and master and crew are the agents of the ship owners, and here the master and crews are all the agents of the exporter for a particular voyage only, and when that voyage is over the contract will terminate and they will come back to their own agency. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. एंड यहाँ पे द क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स relevant to logistics management by an organization. Whenever an organization thinks of logistic management, so what are the three concepts that it will consider? You see, these are the three concepts: the cost trade-off, the total cost concept, the total system concept. Now ये तीनों कॉन्सेप्ट में से हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ जाए. इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट लेट्स सी द कॉस्ट ट्रेड ऑफ. Now, most of the firms have a common object to minimize the distribution cost and maximize the customer's services. And to minimize distribution cost, a firm has to use, cheaper and slower transport, few warehouses, less stock of goods, and this would, of course, bring down the cost of distribution, right? But at the same time, it may bring down the quality of customer services. So, in that sense, as far as possible, all these costs should be minimized and rationalized, right? And in total concept, it is the recognition that the conflicting cost pattern should be examined collectively and balanced at the optimum. And it was recognized that the managing transportation, inventories, and order processing activities collectively could lead to sustained cost reduction and when compared with the managing them separately. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कॉस्ट इंस्टीड ऑफ एक इंडिविजुअल कॉस्ट को कंसिडर करने से अच्छा है कि जो टोटल कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको कंसिडर किया जाए. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑन दैट. एंड द नेक्स्ट वन इज द टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट. नाउ दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टोटल कॉस्ट. And this is one of the most popular concept also, and it looks at the physical distribution in its total form as a system consisting of several interconnected tasks operating together to achieve a given objective. And it represents a philosophy for distribution management that considers all these factors in a decision that are in a way affected by the outcome of the decision. Thus, the system concept of physical distribution, it aims at integrating all the components of physical distribution. ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम को लेके ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है. तो आपको जब इसको डिफाइन करेंगे तो आपको पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम को देखना है, नॉट ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट कॉस्ट या फिर टोटल ओवरऑल कॉस्ट. तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. The next question is discuss the basic. Okay friends, next देखते हैं शॉर्ट नोट है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पे. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं. देखते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट होता क्या है. As the name implies, multimodal, that means the transport system is consists of different modes, more than one mode. क्योंकि हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड है, रेल मोड है, एयर है एंड सी रूट है. तो वैसे चार बेसिक सिस्टम्स हैं, मोड्स हैं, और ये जो सिस्टम है दिस इज ऑल अबाउट दैट. सो इसी के ऊपर आपको इसको डिफाइन करना है, राइट? बिकॉज इसमें आपको बेसिकली बिकॉज रेलवेज में रेलवेज का सर्विसेज इतना अच्छा नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट. बिकॉज रोड से मतलब ट्रेन आपके घर तक नहीं आ सकती, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. सो लाइक दैट पोर्ट में भी ऐसा ही होता है, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज द सर्विसेज ऑफ द कनेक्टर, राइट? तो विदाउट दैट, तो इस तरीके से आपको ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को आपको डिफाइन करना है. ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन शिप ओनर्स लेन एंड मैरीटाइम लेन. Ship owner's lien is all about, it is the right of a ship owner to retain possession of goods carried by him until freight and other charges are paid to him, right? And in maritime, it is the right
to all those persons who have rendered the services to serve the cargo and recover the charges from the ship owners, right? Maritime and ship owner. Then ship owners, it is a possessory lien or right of the ship owners, and this it is a claim on ship, cargo or the freight in respect to the services. जो यहाँ पे शिप में जो काम करते हैं, क्रूज एंड ऑल दैट, तो ये उनकी क्लेम है, मैरीटाइम बोलते हैं उसको. Okay, the next one is here the cargo is under possession of the ship owner until the freight is paid, and here the ship is not allowed to leave the port until the charges are paid by the ship or cargo owners. And it includes the freight to be paid to the ship owners, and it includes the wages and all other salaries for the staffs. And the last one is डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट वेयर हाउस एंड पब्लिक वेयर हाउस. ये इजी है, क्लास 11-12 में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है. ए प्राइवेट वेयर हाउस इज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल एज वी नो, एंड पब्लिक वेयर हाउसेज आर जनरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. And here the owners of the cargo is usually store his own product, and here anybody can store here. Any exporter, any importer can store their goods in public warehouses. And private warehouses doesn't require any license to operate, but a public warehouse is required. Then these warehouses, private warehouses, may or may not be located in the desired location, but public warehouses are located in prime locations. And private warehouses may or may not be scientifically operated, but public warehouses are all systematically and scientifically operated. And again, private warehouses may or may not have trained staff to handle the cargo, but in public warehouses, the staffs are all well trained, professional, right? And loans and advances may not be allowed on the stocks or cargo which is stored in private warehouses. But the people, the traders can avail loan when they keep their goods on the public warehouses. So friends, that's all in this video, and I hope this video is going to help in your preparation. And don't forget to study your books and other study materials. Thank you very much. Best of luck for the examination.